सर, जैसा कि आप तीनों ही लोग जानते हैं, हमने विश्व युद्ध द्वितीय की कई वीडियोस पहले देखी हैं। हाँ सही। जिसमें जापान के ऊपर अमेरिका ने एक परमाणु बम भी गिराया था। हाँ ये तो आज जो हम वीडियो देखने जा रहे हैं, वहां पर एक बंदा है रूही सेनेट। अच्छा अच्छा वो हिरोशिमा जो शहर था जी हाँ जापान का, जहाँ पर बम गिरा था, जी वो वहां पर विजिट करने गया है। अच्छा अच्छा तो वहाँ की काफी अच्छी जानकारी वो आपको यहाँ पर बताएगा, हाँ और साथ में आज वहाँ के क्या हालात है हाँ वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो हम चाहते हैं आप इस वीडियो को देखें, समझें और इस पर अपनी प्रतिक्रिया। सर वो हास्य का तो आप नाम ही मत लीजिए। वो हास्य के बारे में जब भी मैं सोचता हूँ, आप यकीन मानो या नहीं मानो, दिल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हादसा इतना खतरनाक बनाया था कि जिस जगह वो बम गिरा था नहीं, वो इंसान बिल्कुल राख बन के मरा था वो। या इतना खतरनाक हादसा था वो। अब फिर वो हादसे अगर बात करें, आत्मा दुखती इंसान वो भी थे और इंसान अभी भी है। मेरा ऐसा मानना है कि वो जिस जगह बम गिरा था परमाणु, वो जगह तो डेवलप हो गई, क्योंकि जापान तरक्की शुदा देश हैगा, वो तो तरक्की तो करे होगी उन्होंने। हो सकता है क्या है सरू भाई, कितनी जापान तरक्की कर ले, लेकिन जो इंसान खोए हैं उन्होंने, तो उसका दुख तो उनको आज भी होएगा। और दुख दर्द के साथ में वो अपने इंसान को थोड़ी भूले होंगे कोई, वो कि भैया हमारे इंसान इस हादसे में खोए हमने, और उनके साथ ऐसा हुआ है या हमारे साथ ऐसा हुआ है। कोई भूला जा सकता है कि ऐसी बातें? देखो ना भाई, जंग कोई से भी हो, वाकई में नुकसान बहुत होता है, चाहे वो जान का हो, कि वो माल का हो या हर चीज का हो। अब वो खैर जो होना था वो, अब उसका जो अब आगे का मंदिर क्या है, वहाँ के हालात क्या है, वहाँ के जो लोग हैं कैसे आप अपनी जिंदगी को कर रहे हैं, और आगे ये बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है अपने को। चलिए सर, लगाइए आप तो। Hello everyone, Ruhi Sinet here. Welcome to Hiroshima. It's August 6, 1945, 8:15 a.m. in the morning. The American plane named Enola Gay took off from Tinian Island in the Pacific towards Hiroshima, Japan with a nuclear warhead loaded. Hiroshima was an industrial and port city built on a river delta in the Seto Inland Sea. The plane dropped a nuclear warhead from a height of 9,470 meters into the heart of the city and quickly turned back to get away from the city. Just after 43 seconds, the nuclear warhead at an altitude of about 580 meters before even reaching the ground. अब ये देखो, जब वो हवा में अगर फट गया है, अगर धरती पे फिर उड़ने की क्या असर देखा होगा आप। ये देखो आप बाबू भाई, देखो हाँ। ये जमीन है, वो ये बम गिर गया है, वो यहीं पे फट गया हाँ। हवा के जरिए से, वो जाने ज्यादा प्रभाव पड़ा होगा ना मेरे हिसाब से तो। Exploded over Hiroshima at 8:15 a.m. when people were going to their work. Within seconds, the energy released from the splitting of uranium atom first caused a blinding flash of light and was followed by intense heat. Earth temperatures had risen to 4,000 degrees Celsius or 7,200 degrees Fahrenheit. बाप रे बाप, क्या हुआ, जब क्या नजारा इसकी चीज़ ये हवाई वाला नजारा है। बाबू भाई, अपन घर में पानी उबालते हैं तो 100 डिग्री तापमान रहता है उसका, और ये तो 4000 डिग्री बता रहे हैं, तो लोगों का क्या हाल हुआ होगा उस वक्त। And these flame storms traveled 440 meters per second or 1,400 feet per second and instantly spread out into the heart of Hiroshima. Everything melted instantly, including people. About 80,000 people have lost their lives within just seconds. कुछ ही सेकंड में बाबू भाई, जिन ने भी परमाणु नाम की जो चीज बनाई नहीं, सबसे छीनो जितने भी देश हैं, वो सब कुछ नष्ट कर दो, क्योंकि तबाही के सिवा कुछ भी नहीं करता है चीज यार। Even the hardest solid objects had turned into sand. An 18-kilometer long or 59,000 feet long mushroom cloud had formed, and simultaneously incredible amounts of radiation were scattered everywhere. Homes, offices, parks, life had been completely erased. 70% of the buildings in the city had been either destroyed or damaged. वो तो पूरा शहर ही नष्ट हो गया, बचा क्या उसमें, पूरा घातक ही हो गया होता इतनी बुरी तरीके से। बाप रे, ये पहले जमाने में आबादी कम हुआ करती थी, अब ये समय लोग उस टाइम पे बस्ती को कम हो गया, अब 80,000 से एक लड़के में चले गए, फिर वो बचा क्या। बाबू भाई जो बचे होंगे वो रेडिएशन की वजह से कैंसर का मरीज बन गए होंगे बेचारे। Then black clouds had formed, which caused rain, and people unfortunately had drunk the rainwater, namely acid rain, that fell from these clouds. Because of this rain containing radioactive materials, those people gradually had lost their lives with no possibility of a cure. मतलब आप ये समझ लो कि चारों तरफ से कोई बचने का चारा था ही नहीं।
हर तरफ से जिधर जाओ, चाहे पानी में जाओ, चाहे उधर भी जाओ, चाहे आखिर नदी पे जाओ, मौत ही मौत मर रही थी। मौत के अलावा कोई राह नहीं दिख रही थी। एक ही बात सोची थी कि अब तो मरना है। Twice as many of those who lost their lives by the blast had passed away by radiation and fires. Of course, its effect caused thousands of others to get skin tumors, leukemia, and other types of cancers. सरो भाई, भगवान ऐसे धमाकों से बचाया हर किसी को। मैं तो यूँ कहती हूँ है, पहली बात तो जो धमाका हुआ उसमें निपटे लोग, है ना, उनके परिवार वाले, और जो बचे कुचे तो बीमारियों से मरे, है ना। ऐसा दिन तो किसी को भी ना दिखाए। अब आप दीदी ये सोचो कि वहाँ पर औरतें भी थी, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे। जब वो लोग कौन थे, बेकसूर, उनका कोई गुलाम नहीं था, आम पब्लिक थी। और उनके सामने आकर चलो उन्होंने किसी का कुछ गलत तो बात नहीं है, आम पब्लिक से अपना काम धंधे, और मैं ऐसा जो ठंडा हुआ है, तो फिर उसके फिर भगवान ने कितना बुरा वक्त देखा होगा उन्होंने यार। Or to be born disabled or sick. Many people's genetic structures have changed. There are still many victims even today. About 350,000 people were living in Hiroshima at that time, and according to the report issued by Japan, about 140,000 people lost their lives in a few months. But when we fast forward 75 years, the city was already back to life, and the lessons learned from the past were all over the city. वाह यार, क्या गजब की तरक्की करी। ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ पे कुछ हुआ हुआ है। क्यों हुई? कमाल की तरक्की करी यार, तरक्की नुमा देश है वाकई में। ये जो लड़का जो है, हाँ। अगर ये वीडियो इस लड़के की है, तो भगवान ये वीडियो तो इतनी अच्छी बनाता है, एक देखने को बराबर बन कहता है। A 91-year-old gentleman who had personally experienced the day of the blast of the nuclear warhead came to us while walking his dogs with high energy when he realized that we wanted to interview him. I was born here. You can see the tram over there. Yeah. Just the downside of the river, the mountain, have some military barracks. We have a military hospital. My father, he was a military doctor. At the day of atomic bomb drop, he wanted to go to the hospital. At the time of waiting for tram, he wanted to smoke. And just later the cigarette, and tram came in. Cigarette is at that time so precious, so important, so high price. He would like to let it off. Okay, I'll lay. Wow, very impressive. So the laziness of my father, or cigarette, helped my father's life and also me. My mother, she is a lieutenant. 8 in the morning in the summertime, so noisy. The birds or cicadas or some bugs, insects. But at the time of atomic bomb drop, and even the insect, even the birds know something. All silence comes in. She felt something wrong because nobody so noisy. Hot humidity day in the morning, no birds singing, no insects calling. Yeah. So she felt something wrong. Then house is blown out. I live here. I know what's happened. What do you think about Americans? Americans don't like to come here because they feel some guilty. बहुत अच्छा किस्सा सुना है ये महाशय ने, जो किस्सा सुना है, क्योंकि इन्होंने खुद भी चीज को देखा है। तो जो किस्सा इन्होंने सुना है, बाकी में दिल को जो चीज़ों मेरे को ऐसा लग जाएगा किस्सा वो नहीं सुन रहा, बल्कि हम खुद सुन रहे हैं और दिल अंदर से ऐसे रो दिया है। ये बात तो सही है कि अमेरिका वाले वहाँ जाते होंगे और उनको थोड़ा बहुत तो लगता होगा कि हमारे बाप दादाओं ने यहाँ पर बम गिराया हैगा, थोड़ा तो महसूस करते ही होंगे वो। अब वो उनकी किस्मत भी कितनी अच्छी थी, सिगरेट की वजह से। But we haven't said American is bad. Yeah. We didn't say that. Time changed. Half is our fault. One thing is sure is my father and mother doesn't blame any Americans. They blame the war. Us. वाकई में यार बहुत गहरी बात बोली उन्होंने। वो कह रहे कि गुनाहगार तो हम भी है, क्योंकि कहने का युद्ध हुआ होगा तो कहने का वो गुनाह हमारे बिल्कुल बड़ा होगा, तो उनको गुनाहगार तो ठहरे, कहने का हम भी गुनाहगार। वही वो यूँ कह रहे हो, कितनी अच्छी बात बोली यार। कहीं ना कहीं लड़ाई होती है तो ताली एक हाथ से तो बजती नहीं, दो हाथ से बजती, तो गलती दोनों की रहती है, सीधी सी बात है क्या ना।
So this is the reason I speak English. When the American army come here, the English education is obligation. We have to learn. But when I was 9 years old, my mother insisted me to go to the cram school. So I said, Mom, I don't know what they're talking. I cannot speak even Japanese well. But my mother insists me speaking. ऐसे अपने हिंदुस्तान में अंग्रेज आए थे तो उन लोगों ने अंग्रेजों ने अपनों को अंग्रेजी सिखाई है कि नहीं सिखाया कि नहीं सिखाया। ऐसे वहाँ गए होंगे अमेरिका वाले तो जापान में तो जापान वालों को सिखाई अंग्रेजी उन्होंने। अच्छी बात है ना। है कि नहीं? जैसे क्या है कि ज्ञान को बांटने वाली बात है, ज्ञान हमेशा जितना बांटोगे ना उतना बढ़ेगा, तो ये बात तो अच्छी है। She dropped her eyes and said, "Oh my God! You know, we lost the war. If you cannot speak, you want to be another loser. Oh, You want to lose again." So this is the reason I speak English. You speak very well, sir. No, not for that. How old are you, sir? I was 91 or 92. I talk too much. No. Okay. लग ही नहीं रहा यार। देखो बाबू भाई यार, उनका खान पान चलन फिलन वो कितने फुर्तीले लग रहा है कि तुम्हारी उम्र के लग रहे हैं यार। Just wait a minute. Could you pull? This is my name card. My name is Asai. Nice to meet you. This is my हमें भी dog. अच्छा लगा। Wow. Gambakudon, which is only 150 meters away from center of the blast, was built with solid concrete construction to prevent it from collapsing in case of an earthquake. It was one of the few buildings that remained intact, but despite its strong structure, everyone inside was turned into ashes within seconds of the blast. बाप रे। यार ये सिंगल बहुत दुख हो जाए ना, बहुत अफसोस हो जाए यार। और बिल्डिंग ने कोई छोटी बड़ी बिल्डिंग नहीं, कितनी बड़ी बिल्डिंग थी यार। लेकिन ये सोचो बाबू भैया कि वो कितनी मजबूत थी, तो उसका ये हाल हुआ। अगर कमजोर होती और वो कुछ अलग टाइप की बनी, कमजोर टाइप की ऐसी बनी होती तो सोचो तो क्या होता। दीदी वो तो जो कमजोर घर थे वो तो ढेर हो गए, खाली एक मजबूत बिल्डिंग बची थी। उसमें भी तो राख हो गए जो अंदर थे। तो गर्मी कितनी थी उसमें? 4000 डिग्री। आप 4000 डिग्री कैसे किसको है? इतनी गर्मी होगी तो आदमी का बची रहेगी। आत्मा फड़फड़ा जाए। And in the Hiroshima Peace Memorial Museum, there are visual exhibitions and arrangements prepared using today's technology. In addition, from the remaining clothes of the victims to the personal stories of the lost lives, all the shocking details here are enough to take you back to that day. The flame in the middle has been burning continuously since 1964. It will continue to burn until all nuclear warheads in the world are removed. ये चाहते हैं जो बात आप कह रहे हो, हम भी ये लोगों ने हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि ये इनको खत्म कर दो, इनको हटा दो, ताकि फिर कभी ऐसे विनाश नहीं हो। हम आपके साथ हैं। And the nuclear threat is completely wiped out from the world. The Fukuramachi building is an elementary school near the blast site. About 160 students and teachers have lost their lives here. There are many ruins inside the building. And only 100 meters away is the statue of Sadako Sasaki. Here's the story. A 2-year-old girl named Sadako and her family are fortunately unharmed when the nuclear warhead fell within 2 kilometers of their home. The family rejoicing that they weren't physically injured at first glance, they sent their daughter to school like her peers until 1954. It is later discovered that the little girl had blood cancer when she suddenly falls while running at the school, and strange swellings are discovered both on her neck and behind her ears. People around her told the little girl if she makes 1,000 paper cranes, she will be healed. Filled with hope, Sadako started folding papers in a hurry, but she didn't live long enough to fold 1,000 cranes. The girl who hoped to live made 644 cranes during her stay in the hospital, then passed away. देखो आपके उसको जैसा बोला उसे बंदा करा, उसके बाद ही वो मौत को नहीं हरा सकी। जीने की चाह में करा ना उसने, उसको बोला तो। बाबू वही बात है ना, जैसे धमाके से मरे परिवार वाले वो तो मर गए, और जो बच्चे उनको कैंसर हो गया तो यूं पे तड़प के मरना पड़ा ना उनको। तो बिल्कुल यार, तो उनको एक सीधे मर जाते हैं। एक बात ये कि तड़प के क्या मरे, ये और दुख हुआ यार। Today, children around the world continue to fold the rest for her. 1,000 cranes have been folded more than 1,000 times. All these paper cranes are displayed around this monument, and at the Orizuru Tower, visitors can make their own paper cranes. So I made one for myself and threw it down from the 12th floor.
अच्छा The paper I threw was mixed in with Sadako's dream. बाबू भाई हाँ। ये उस लड़की को श्रद्धांजलि देने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा हाँ। इन लोगों का। Japanese people have no dislikes for Americans. They believe peace education is important. In schools, teachers and textbooks don't blame the Americans but blame the war. They believe this is the key for taking next steps forward. Pondori Shopping Street is the heart of the city. It is the busiest spot in the city for shopping and walking around in the evening. We can see how Hiroshima became what it is today. The site of the nuclear blast has now become a thriving park surrounded by life. Today, the city is a vibrant metropolis with a population of 1.2 million people. It is rapidly developing as a major port, industry and tourism city. वाकई में सरू भाई उनको मानना पड़ेगा, पुरानी यादों को लेके नहीं बैठे रही है वो, और नई यादों के साथ में उन्होंने तरक्की करी है कि भैया जो हो गया ठीक है, अब नया कुछ करो अपन। उससे क्या है, उन लोगों को रोजगार भी मिला, सदमे को भुला के वो आगे बढ़ गए, तरक्की करी उन्होंने। चौदह जीवन वो कहते थे ना, जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह शाम। तुमने तो मेहनत करी, कोशिश करी, आज चारों तरफ खुशहाली है। While learning from the past, it never gets stuck to the past and just focuses on the future. They gave me an origami bird. 3 days later, US dropped a nuclear warhead on Hiroshima. It dropped another one on the city of Nagasaki. These were the warheads dropped on World War II more than 75 years ago. Now they have become even more powerful. The nuclear warhead dropped on Hiroshima created a blast of 15 kilotons, which corresponds to the strength of 15,000 TNT. If this nuclear warhead had exploded in the city center of New York, it would have looked like this. The radius of the area affected by the blast would have been approximately 1.5 kilometers. The yellow circle shows the radius of the fireball that was released as a result of the blast. Within the red circle, the rate of loss of life would have been almost 100%, and all concrete structures would have been either completely destroyed or severely damaged. Most of the settlements inside the black circle would have been destroyed, and there would be a great loss of life and injury. The orange circle indicates the area where third-degree radiation burns occurred. But the destructive power of this blast looks nothing compared to B-83, the most powerful thermonuclear weapon in the US inventory today. बाबू भाई उससे मैं समझता हूँ जिससे ये परमाणु बम का बता रही हूँ कि परमाणु बम से 100 गुना ज्यादा पावरफुल होगा आज का हथियार। तो उससे इससे ज्यादा कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना पावरफुल रहेगा। अरे फिर तो ये समझ लो कि हम बचने के लिए कोई चांस ही नहीं, फिर तो सीधा मरना फिर तो। बाबू भाई मरना तो पहले भी था और मरना अभी भी है कि नहीं? पहले क्या है, 1.5 किलोमीटर के दायरे में नुकसान हो रहा था, अब 100 किलोमीटर के दायरे में नुकसान हो रहा है। डबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डबल टिबल हो रहा है, फिर कई गुना नुकसान हो रहा है। डबल टेबल नहीं हो रहा, दोनों गलत हो, बल्कि 100 गुना ज्यादा नुकसान हो रहा है, भयंकर वाली तबाही है। This corresponds to the power of 1.2 million tons of TNT. If it had been launched on New York, radius of the area affected by the blast would have been over 11 kilometers. There is also the largest nuclear warhead ever tested by the United States under the name Operation Castle Bravo in 1954. It produced an explosion of 15,000 kilotons, that is more than 1,000 times of the blast in Hiroshima. If it had been launched on New York, the radius of the area affected by the blast would have been over 35 kilometers. However, there is a nuclear warhead even more powerful than that. This one detonated on October 13, 1961, called the Tsar Bomb by the Soviet Union, is the largest that has been ever detonated. It caused a blast of 50,000 kilotons, that is more than 3,300 times the size of the nuclear warhead dropped on Hiroshima, and the resulting mushroom cloud was so tall that everything on Earth seemed tiny in comparison. हिमालय पर्वत से भी बड़ा। बोलो यार, क्या दिमाग लग रहा है? आखिर ये चाहते क्या है ऐसा करके यार? अरे मैं तो कह रहा बाबू भाई का पूरी धरती में खड्डे करके क्या फोड़ना चाहते हैं, पूरी धरती को क्या करना चाहते हैं, क्या वही में नहीं आ रही है मेरे यार। पावरफुल हथियार बदलने के आगे तुम आकर तुमने घेरा क्या तुम भी बचोगे क्या? और हमेशा क्या हथियार ने ऐसा ना किसी का साथ दिया ना, जो जिस हथियार की क्या बल पे जाए वो उसी हथियार से मारा गया। अभी तक दिन में ये दे देते हैं, तो तुम ये करो क्या? ऐसा करो, इंसान के नाम पे एक दाग, एक धब्बा, क्या कि ये फिर ये समझ लो कि इस समय तो इसे तो बची नहीं फिर तो। बाबू आपने इतनी लंबी बात बोली, तो एक बात मैं खत्म करता हूँ कि सपेरे की मौत सांप के काटने से ही होती है।
will have been over 50 kilometers and still be visible even from space. The Tsar nuclear warhead was produced more than 50 years ago, and it is estimated that there are 15,000 nuclear warheads in the world today. If the Nuclear Non-Proliferation Treaty had not been signed in 1963, the world would now be home to much more powerful nuclear warheads. Last but not least, I want to tell you the story of Tsutomu Yamaguchi. Yamaguchi used to work for Mitsubishi, which we now know as a car brand, and he visited Hiroshima on a business trip in August 1945. Realizing that he had forgotten his ticket stamp on the way to the train station, which was near to the detonation site, he returned to his office, which was a little further from the detonation point, and at that moment he witnessed the first nuclear warhead floating in the sky. A sudden and intense flash followed by the blast ruptured his eardrum, temporarily blinded him and caused severe burns on the left side of his body, but he was still alive. He spent the night in the bunker and his wounds were not taken care of. The very next day he somehow dragged himself to the station, left Hiroshima and returned back to his town. He was eventually able to get some treatment for his wounds at home. Despite being severely injured and heavily bandaged, he informed Mitsubishi 2 days later that he had returned from his business trip to Hiroshima and he could work now. बस ये समझ लो कि भगवान की तरफ की उनकी जिंदगी थी जो बच के आ गए वो, और उनको तो भैया कान के पर्दे तक फट गए, ये समझ लो पूरा पेट आते ओजड़े कैसे उन्होंने बर्दाश्त करा होगा। एक जिंदगी थी वो लौटे हैं वापस, वो मौत को चकमा देकर आ गए, समझ आ लो। गए वो। बाकी आप उसकी हिम्मत देखो, उसकी लगन देखो कि इतना सब कुछ होने के बाद वहाँ पहुँच के क्या किया, कभी मैं वहाँ से वापस आ गया, बोला मेरे को काम पे बना, कितनी बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है। The fact that he went to work as if nothing major had happened shows us the crazy Japanese work ethic. You might consider Yamaguchi lucky to have survived the nuclear warhead in Hiroshima, but he was unlucky about returning home, which is Nagasaki. While he was telling his manager at work about his crazy Hiroshima experience, Nagasaki was hit with the second nuclear warhead ever dropped in the world. Once again, he came up against an intense glow, solved the blast, and survived to return to work again. Thank you for watching the first video that I shot in Japan. 2 more videos will come from this amazing country. I shot videos in Pakistan, Yakutsk and Tanzania. If you want to support me and my team, I now enable the join button on my YouTube channel. एक एक चीज को क्या डिटेल से समझाया है कि अगर वो चीज अगर आज अगर हो तो उस टाइम उसका जो इरादा बिल्कुल उसका जो वो ताकत वो तो कुछ भी नहीं, जो आज के बम में अगर ये चीज अगर ऐसे अगर कहीं गिरे जाए तो उसका तो इतना बड़ा एरिया, बाप रे बाप देख गया हूँ कि खाली गिरने खाली सुन के मैं तो ढूंढते ऐसे होने के कहीं ये लोगों के दिमाग नहीं चल रहा और ये ऐसा काम कर बैठे। बाबा ऐसा है कि वो दुनिया का पहला परमाणु बम था, और आज तकरीबन हर देश का रहेगा, और हर देश एक दूसरे से मारने के लिए डरता है वो, क्योंकि वो आपने इसको मारा तुम मेरे को मारोगे, ठीक है, ऐसा है मामला। मतलब कहने का कोई ये पहली बार हो जाएगा कि जैसे आज मैं इसको मारूं तो इसके बाद भी जो है ये कोई नहीं छोड़ेगा, ये मैं को मार देगा, तो वो डर जो है दहशत जो है दोनों में बैठी हुई। और शायद बाबू भाई इसीलिए है ना वो खत्म नहीं करते हैं हथियारों को, कि वो ये सोचते होंगे कि ना मैंने अगर खत्म कर दिया और सामने वाले खत्म नहीं करे तो मेरा तो खत्म हो गया मामला, और उसने नहीं करो मेरे पे फेंक देता हो, इसलिए वो खत्म भी नहीं करते ये भी सही है, ये धमकाने के लिए एक हमें के लिए भी इसलिए हो गया देना भी। बाबा उन्होंने बना के रख लिया वहां तक के, ठीक है, खाली मानना मत, एक दूसरे को सेफ्टी के लिए बना के रख लिया, वो बहुत अच्छी बात है। सर भी इस वीडियो के अंदर जो 2-3 जनों की कहानी बताई है ना, और खासकर वो छोटी बच्ची की कहानी बताई, बहुत दुख हुआ मुझे उसको देख के कि उसको जीने की इच्छा थी और फिर वो कैंसर से मरी, मुझे बहुत दुख हुआ और मेरे दिल को छू गई उसकी कहानी। उसका ये सब देख के मेरा अंदर से हिल गया मेरा दिल कि उस वक्त क्या बीती होगी लोगों के ऊपर। मेरा ऐसा मन है कि पहली बार तो बचा नहीं, सब बम के आगोश में आ गए, अब कई ऐसे में कई बच्चे तो बीमार वो अपने बीमार भी हो गए, कई बच्चे भुखमरी का शिकार वगैरह को कई लोगों ने बच्चों ने भीख मांगना भी शुरू कर दिया होगा। ऐसा मेरा मानना है, जब हालात ऐसा कोई बचा नहीं तो आगे करेंगे तो करेंगे क्या। बाबा कुछ और लोगों की भी कहानी बताई, खुश नसीब लोगों की जो बच के आ गए, उनको किस्मत को बचाना था, बच के आ गए, उन्होंने दूसरों को भी कहानी बताई बम के बारे में, तो कितना खुश नसीब होंगे अपने आप। मतलब वो ये एक जगह अपने लिए सबक है वो, देखा जाए तो
कि देखो भाई ये ऐसे हादसे के कहते हम भी, लेकिन आज हमने मेहनत करी, कोशिश करी, हिम्मत करी, तो देखो आज हम आज भी आपके सामने हम खड़े हैं। बाबू भाई इसमें हिम्मत और कोशिश की कौन सी बात है, और क्या है, और उसकी किस्मत थी जो बच गया वो है। लेकिन एक लगता है ना कि यार देखो बच्चे क्या उसके बाद फिर उस चीज को समझना, फिर उस चीज का आगे बढ़ना, वो एक कोशिश ये कहो कि वो चीज को लेके नहीं बैठे रहिए वो। ये कुल मिला के वीडियो में नॉलेज भी बहुत अच्छा मिला, सीख भी बहुत अच्छी मिली, बहुत अच्छी जानकारी भी मिली। और जो भाई साहब ने वीडियो बनाई थी उनको धन्यवाद देता हूँ दिल से, क्योंकि बहुत प्यारी वीडियो बनी, हमारे को बहुत ज़्यादा जानकारी अच्छी मिलेगी। और ऐसी दोबारा आपसे नॉलेज वाली वीडियो से आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।